All right. Welcome back to another stream after a long time. My bad. I was थोड़ा busy with few things, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया. But yeah, finally you are back, and today is day 34 of me streaming daily. And let me just check if we are live, and I'll send the link in the group also. Okay, just give me a second. Hold on. Yeah, we are live. Also wanted to show you the profit that we made in like recent days, जहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा था. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो. एक बार कम्युनिटी में शेयर कर दूँ, उसके बाद तुम लोगों से अच्छे से बातचीत होगी, सारी चीज़ें होगी, सारे डाउट्स सारी चीज़ें क्लियर होगी, एंड विल बी ट्रेडिंग गोल्ड एंड BTC एट द सेम टाइम. ओके, सो दिस, ओके, आई हैव शेयर्ड द लिंक. आई नो थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में, बट डोंट वरी, यू विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ स्ट्रीम्स मॉर्निंग में. ठीक है, आई ट्राई टू कम आज भी 5:30 बजे. लेट्स सी वी कैन कैच सम टोक्यू सेशन, एंड मे बी वी कैन ट्रेड उस सेशन में भी, बिकॉज अभी एज यू कैन सी द मार्केट इज़ वेरी चॉपी राइट नाउ. अगर तुम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, यू विल बी एबल टू सी दिस, एंड वेन एवर you see this type of market, you know what to do, right? You never trade in market like this. You never fucking trade जब भी तुमको इस तरीके का मार्केट दिखता है. ओके, दैट्स फॉर श्योर. उसके अलावा देर आर 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर राइट नाउ. आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट, जो कि बहुत जल्दी तुमको अभी देखने को मिल जाएगा. ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कर लो. एंड येस, आई नो 2-3 दिन का ब्रेक हो गया था. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आई वॉज नॉट इवन एक्टिव ऑन द टेलीग्राम कम्युनिटी. ओके, but we're back. Okay, that's what that's the only thing that is that matters right now. Cool. Chalo, 1 hour time frame, gold is bullish. Okay, it is bullish, and it will be bullish. ठीक है, gold will be bullish for some time, and gold इसी momentum में अभी फिलहाल रहेगा. Definitely there is a retracement. You can see that if it is taking a retracement, this is a level that it is taking retracement from. ठीक है, hi Vinay. Okay, yo, what up? ठीक है, too choppy. Not gonna take any trade at this point. Zero trades. ठीक है, and I hope कि तुम लोग भी अभी कोई भी ट्रेड में नहीं हो, because this is a market that you should not be like, do not consider this market. Simple as that. ठीक है, तुम देख रहे हो कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन आए नीचे की साइड से भी. अगर तुम 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाओगे, यू विल बी एबल टू सी लॉट मोर डिटेल्स. ठीक है, चलो 5 मिनट पे भी अच्छा खासा तुमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि ये लेवल पे है. ओके, दैट इज़ अ क्लियर रेजिस्टेंस दैट यू गाइस आर एबल टू सी, and there is a supply and demand. You'll be able to see that what we need to see right now. Okay, market will definitely break out this. Okay, once it's gonna break out this, then we might be able to see some good trades. Also, let me show you the yesterday ka trade where I was not trading, but when I was not live streaming, but I was trading. Okay, let me show you just a second. History, let me go back. Okay, today let me show you the whole history. Fuck that shit. Okay, you see that $5,052. You saw that. Okay, that was the bull run that I captured in fucking gold. ठीक है, 0.7 लॉट के साथ हमने वो ट्रेड लिया था. 5,000 इन, आई थिंक लिटरली वो 2 घंटे ट्रेड चला था, बट इट वॉज क्रेजी एज हेल. समझ रहे हो? वॉट इज द बैलेंस राइट नाउ? इज 20,000 फ्रॉम वेर वी स्टार्टेड 2,000. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? So this is how you grow your account on a daily basis, and you can do that too. That's the only thing. The only thing is important that you need to, like, whenever you're taking a trade, make sure you're noting down why the trade was in loss, why it was win, this and that, what was setup, what was this, that, everything you need to note it down. Okay, that will definitely help you to the next level. You're getting my point? So this was a trade. It is crazy as hell. 5,000 in one trade, that is literally insane. You're getting my point? So next thing what you need to look for, gold is definitely bullish, but right now am I gonna go for any trade? No. Okay, that's a very basic common sense. अगर market एक अच्छी जगह से एक it is just accumulating right now. Okay, I would not say कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ crazy movement आ सकता है अभी तक. right, अभी 9:30 9:45 बजने वाले ऑलमोस्ट. right, हो सकता है 10 बजे के बाद हमें कुछ अच्छे खासे
क्या बोलते हैं उसे, लाइक मूव्स कैप्चर करने को मिले, बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट गोना होल्ड ऑन टू दिस एंड या राइट नाउ इट इज़ क्रिएटिंग अ ग्रेट डब्ल्यू, ठीक है, तुमको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, या लेट्स सी, इट इज़ इन दैट जोन जहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को यहाँ से मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ओके, सो जस्ट वेट फॉर इट एंड जैसे अगर ब्रेकआउट मिलता है आई विल टेल यू, ठीक है, वी कैन ट्रेड साथ में, नो स्ट्रेस, ऑलराइट, ठीक है। लेट मी जस्ट गो बैक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुमको कुछ बड़े बड़े मूव्स नहीं देखने को मिल रहे होंगे, बट ऑल्सो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है देन दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट। अगर इफ़ इट वांट्स टू गो डाउन इट हैज़ टू टेक द लिक्विडिटी फ्रॉम दिस साइड, ओके, यहाँ की लिक्विडिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन ऑर्डर फॉर गोल्ड टू गो अप, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सो या लेट्स वेट फॉर दैट एंड आई थिंक 10 बजे के बाद मे बी वी कैन सी सम गुड मूव्स। I'm not interested in any trade right now, okay, it is at the good level जहाँ से reject कर सकता है, it is rejecting off of that area, तुम देख रहे हो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, दिस इज़ अ 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, राइट, बट मोस्टली तुम्हें पता है फोर्थ टाइम में हमेशा वो रिजेक्ट नहीं करता है, दैट इज़ अ ब्रेकआउट पॉइंट जहाँ से हमेशा रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता है, इट गोज़ अप फ्रॉम दैट लेवल, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो वो चीज़ ध्यान में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए। चलो, नाइस मोमेंटम आई वुड से, ठीक है, अगर ओवरऑल तुम देखोगे वेर वी आर राइट नाउ, ओके, लॉट ऑफ डंप, बहुत सारा डंप, बाय द वे जो 5000 का जो प्रॉफिट था वो इस लेवल पे था, ओके, आफ्टर मार्केट ओपनड द गैप अप, ओके, दिस वाज द ट्रेड जो हमने लिया था यहाँ पे, इट वाज अ वेरी सिंपल ट्रेड, वेरी क्रेजी एज ट्रेड एंड नाउ यू कैन सी द कैपिटल, दैट इज़ इनसेन, राइट, हर एक ट्रेड तुम्हारे सामने लिया था एक्सेप्ट द 5001, ओके, अगर तुम 5000 वाला ट्रेड छोड़ के बात करोगे, एवरी ट्रेड आई टुक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडीज आइज, ओके, अकाउंट डू नॉट फॉरगेट 2000 से इस अकाउंट को हमने ग्रो किया है, ओके, आई कैन गोना मेक अ डॉक्यूमेंट्री आउट ऑफ दिस, हर एक चीज़ को मैं एक अच्छे से तुमको समझाऊंगा। देखो ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, राइट, यू सॉ दिस ब्रेकआउट, क्या बोला था जस्ट 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, आई सेड दैट मार्केट हमेशा 3 बार, हमेशा एक चीज़ से जो कोई भी है, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, हमेशा 2-3 बार वहाँ से रिजेक्ट करता है, फोर्थ टाइम देर इज़ अ 90% ऑफ द चांसेस दैट मार्केट विल ब्रेक ऑफ ऑफ दैट एरिया, ओके, बट जस्ट बिकॉज मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ है आर वी गोना टेक एनी ट्रेड, नो नो, ओके, इट कैन रिजेक्ट, अभी 3 मिनट बचे इस कैंडल में, अगर तुम देख रहे हो 3 मिनट में अगर कैंडल कुछ अच्छी खासी बन रही है, हो सकता है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन रिवर्स ऑफ ऑफ दैट एरिया वेरी सून, ओके, सो डू नॉट गेट टू एक्साइटेड, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, वी स्टिल हैव अ टाइम, दैट्स इट। let me mark some important zones, okay, this is fine but we need to focus on some levels, okay, this is the level that I want market to come and definitely it is very close to that area because there was a support before like off of this area, right, अगर यहाँ से अगर रिजेक्ट भी होना है दिस इज़ अ गुड लेवल जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, ओके, you might be able to see some SMT diversion at this point because यहाँ से breakout हो चुका है, it will come down and then it will go again, go up and then it might come down again, okay, very simple, but definitely gold is fully bullish, तो हम उसमें कुछ भी अभी नहीं बोल सकते, you need to wait for some time, okay, but at the same point you need to understand that if gold wants to go up, okay, मैं तुमको एक simple structure बता देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, I will tell you something, okay, this level is very crucial, okay, market has not touched this level, focus on this very carefully, okay, this level is very important, market did not touch this level, and what is very important about this level and why this level is very important, because there is a good you can say high, okay, that market created before, it went down and then it went again, but on that high you need to understand that there is a FUG at this level, okay, market did came, okay, tapped into that FUG and then it went up, right, but still there is a order, there are orders are pending at this area, अगर गोल्ड को ऊपर जाना है then
इट माइट हैव टू कम टू दिस लेवल एंड देन वी कैन थिंक कि हाँ यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट ये लेवल को टच होने में बहुत टाइम है। हो सकता है यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप तुमको देखने को मिले, लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इफ़ वी फाइंड सम गुड सेटअप, सिंपल एज दैट। कूल, ऑलराइट, नाइस। 5 मिनट पे क्या हुआ? ओके 30 सेकेंड्स बचे, 33 सेकेंड्स बचे, ठीक है। 33 सेकेंड्स में देर आर टू पॉसिबिलिटीज यार। वन, इट विल कंटिन्यू गोइंग अप। सेकेंड, it will directly come down, reject off of this area, and you know what to do when market will reject off of this area, right? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुमको अगर जाओगे तुमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट लेट मी सी, ठीक है। बट ब्रेकआउट तो मिला है यहाँ पे, ओके। अगर हमें बुलिश में भी जाना है, डेफिनेटली मार्केट इज़ बुलिश, एंड अगर इस लेवल पे भी आना है तो उसको टाइम लगेगा, तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ओके। सो सेकेंड थिंग इज़ दैट वन थिंग वी नीड टू वेट फॉर इज इट टू कम डाउन एंड देन वी कैन गो फॉर इट, समझ रहे हो। दिस लेवल इज़ वेरी इजी, हमेशा मार्केट इस लेवल पे आके पंगे लेता है, तुमको पता होगा जब ये इस लेवल पे भी आएगा, वंस इट्स गोना कम टू दिस लेवल, ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। देर आर वेरी रेयर चांसेस जहाँ पे गोल्ड बहुत स्मूथली मूव करता है और डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला जाता है, बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। गोल्ड कम्स डाउन, इट कम्स टू दिस लेवल एंड देन इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ दिस, तो ताकि लोगों को पता चले कि ओ शिट यहाँ से बाइंग हो सकती है, बिकॉज मार्केट वांट्स टू invite some buyers at this point, right? What happens when buyers come and they see some two green candle and they buy off of this area, right? What happens? They target whatever, and then this is their stop loss most of the time, right? This is their stop loss. So what market does, it goes to this, does this, and it comes back something like this, like, you know, and then it goes up. This happens all the time in the market, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग यू गाइस फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ व्हाट मार्केट डज ऑल द टाइम, इट टेक्स द स्टॉप लॉस एंड देन इट गोज अप, ओके, इवन दो इट इज सेम विथ इफ द मार्केट इज बुलिश, आई मीन बेरिश, ठीक है। सो यस, इस चीज़ को ध्यान में रखना, डू नॉट एंटर बिकॉज यू जस्ट सी कि हाँ चल ठीक है एक रिट्रेसमेंट हो रहा है वहाँ पर, मार्केट रिट्रेस करने आ रहा है एंड देन इट्स गोना गो अप ऑफ दैट एरिया, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंटली अगर वेट करोगे, 20 से 25 मिनट अगर तुम वेट करोगे, जब लोग एंट्री करता है तुमको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द जो एरिया दिखते हैं जहाँ से वो सबको लगता है कि ओ शिट यहाँ से एक अच्छी एंट्री बन सकती है, दैट इज़ वाई दे आर गिविंग यू दैट सेटअप, भी सबको दिखाना है कि हाँ यहाँ से एंट्री बन सकती है। देन 40%, 60%, 70% ऑडियंस उस लेवल पे बाय कर लेती है या सेल कर लेती है, एंड देन दे गो डू समथिंग दैट विल टेक आउट ऑल द ऑर्डर्स एंड देन दे गो अप और डाउन, ठीक है। सो या इट्स वेरी सिंपल, बट लेट मी सी हाउ इट इज गोना प्ले एट दिस एरिया, ओके। ऑल्सो मैम थोड़ा आई माइट कफ, क्योंकि मुझे थोड़ा खांसी हुआ है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। चलो बट वी आर बैक, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बैक, आई मिस स्ट्रीमिंग डूड, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा याद आ रहा था स्ट्रीमिंग का, समझ रहे हो। Also I'm gonna work on a lot of videos today, so let's see what we can record, and yep, there is a lot of content coming on our YouTube for free, so make sure you stay tuned for that as well, ठीक है। इस लेवल पे जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे मैंने बोला था, देर आर 3 levels, ओके, you need to focus on this. There are 3 levels. One is this is the one probability that market can go and reject off of this area. This is the second level, market can go and reject off of this area, and this is the third level that market will go and reject off of this area, okay. So when market will go, it will react, and from that reaction we can get some trades, ठीक है। That's why I'm gonna mark 3 of them, and अभी तुमको दिख रहा होगा 5 मिनट पे यू आर एबल टू सी रिजेक्शन, बट इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो, इट्स ऑल राइट बट नॉट वेरी प्रोमिनेंट, कूल, ठीक है। आई होप ये सबको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड
me marking that line, and yeah, just wait for that. Everybody who are coming, welcome back. We're streaming after 3 days. Subscribe to the channel and hit that fucking like button, bro. ओके देखो रिजेक्शन तो आएगा, देर इज़ नो डाउट, ठीक है, रिजेक्शन तो आएगा, देर इज़ नो डाउट. ऑल्सो हम एक रिजेक्शन में भी एक स्कैल्प निकाल सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की होगा बिकॉज द होल मार्केट इज़ बुलिश, तो उसमें मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता. आई वॉन्ट टू वेट फॉर अ सेटअप, बट वी कैन कैप्चर ऐसा कुछ, ठीक है. अगर 1 मिनट पे जाओगे ये बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है. ओके, व्हाट आर यू एबल टू सी ऑन 1 मिनट? It did enter into the 1 minute FEG, okay, and it did reverse off of that area, so there is a chance that it might continue going up. It might continue going up just because it entered into this FEG, okay, 1 minute FEG. Great order block here, so yeah, high chances that it will come down to this area very soon. Sorted. अगर इसमें एंटर नहीं करता एफ में, सो देयर वर अ चांसेस दैट क्विकली हमें नीचे यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है. ओके, एक काम करता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. लेट्स गो बैक टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम. यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तुम्हें चीज़ें देखने को मिलेगी. विल सी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी 1 मिनट पे जाने की, विल गो देयर, बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी 1 मिनट टाइम फ्रेम, सिंपल एज दैट. ऑलराइट. ठीक है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर, ठीक है. अगर तुम देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पर तुमको ट्रायंगल देखने को मिलेगा. दैट मार्केट वॉज like basically it was just like accumulating off of this area. Okay, there are two possibilities here. First is this can be a prominent breakout जो कि market अभी दे रहा है and it's gonna continue going up. Second thing we can see here, it's just gonna reject off of this area and directly come to this level, ठीक है. This is next level that we can expect. Third prominent thing that you'll be able to see that it might come to this area, right? Once it's gonna come to this area, there's so many people might think that oh shit, it's gonna like reject off of the यहाँ से breakout हुआ है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा trade मिल सकता है, but no, then it can go to this level and do this. You're getting my point? So there are multiple scenarios that you'll be able to see here. All right. People are watching, share the stream with your friends, family, whoever is into trading. And अगर तुमको trading सीखना है from the scratch, lot more content is gonna come on my YouTube channel for free. So be ready for that. And I feel like it's gonna go up. Gold is very bullish, dude. Gold is very bullish. Gold is dying to go up. तुम देख रहे हो कितना गिरा है. I mean इतना गिरने के बाद तो यार बनता है, समझ रहे हो. Crazy. $31. No, we're not gonna go there. 1 minute. This level is important. No. ठीक है. नहीं ले सकते ट्रेड. नहीं ले सकते.
नहीं ले सकते, वी वांट द रिजेक्शन, नहीं ले सकते यहाँ से, ठीक है। जस्ट अज्यूम, ठीक है, अज्यूम करते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अज्यूम करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ओके, वेंट अप, created a good FEG on 1 minute time frame. Market came, tapped into that FEG, this level, went up, ठीक है। अगर just from a normal people's perspective, अगर तुम लोग यहाँ से भी बाय करते हो, टारगेटिंग चलो ठीक है, ये वाला टारगेट करते हैं, अगर यहाँ से भी बाय करते हो, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ तक बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, ठीक है। सो नाउ जस्ट थिंक कि डेफिनेटली यार ये स्टॉप लॉस तो चाहिए ना हमें, वी नीड दिस स्टॉप लॉस राइट, हमें तो स्टॉप लॉस चाहिए। तो अभी किस तरीके से मूवमेंट होगा, ये स्टॉप लॉस खाएगा अभी राइट, जो लोग बाय किए हैं ऐसे, आई डोंट थिंक सो किसी ने बाय किया होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो लाइक लोग इतने स्टूपिड है कि जस्ट बिकॉज ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ से बाय कर रहे हैं, बट या यू, ठीक है, आया रिजेक्शन, गुड लेवल यहाँ से। अगर देर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर, ओके, you are able to see FEG on 5 minute, okay, there is a fair value gap on 5 minute, let me just quickly mark this, okay, FEG on 5 minute, ठीक है। there are two possibilities here, one, it's gonna directly come and tap into that area, and that is a very prominent area कि जहाँ से एक रिवर्सल अच्छा खासा मिल सकता है। second probability is that it's directly gonna inverse that fair value gap, अगर इन्वर्स करता है देन दैट्स ओके, इट वांट्स टू गो अप, ओके, वेरी रिस्की ट्रेड बट वी हैव टू एंटर, देखो वेरी रिस्की ट्रेड, ओके, बट it did tap into the major zone that I am looking for right now, but I'm not gonna buy, at least 10 मिनट दो, 10 मिनट होल्ड करो, 10 मिनट बाद पता चल जाएगा क्या हम बाय कर सकते नहीं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग राइट नाउ, वाई, you saw that there is a meaning behind this wick, dude, there is a meaning behind this wick, market did not just come down to like tap into this, right, 2.5 मिनट अभी भी बचे, देन हमेशा क्या होता है, मार्केट रिवर्सल लेता है, देन उसको फिल करने आता है, नाउ दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, ओके, आई एम इंटरेस्टेड, अगर इसको इन्वर्स करता है, इफ़ इट्स गोना इन्वर्स दिस, देन हम बाय तो बिल्कुल नहीं कर सकते उस टाइम पे, हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल तक आने का, बट अगर यहाँ से टैप इन करके फिर से अगर इन्वर्स ऊपर जाता है, देन देर इज, ओके, इट केम डाउन अगेन, व्हाई इज इट डूइंग दैट, dude, I'm so much interested in buying, I'm just waiting for another, thank you, welcome Binti Babu। ठीक है, अगेन चलो वेट करते 2 मिनट, लेट्स नॉट हरी, ठीक है, ज़्यादा रश नहीं करते हैं, लेट्स नॉट रश इनटू दिस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, होल्ड अप। आई नो थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ, बट तुम लोग ये भी समझना चाहिए दैट यहाँ से अगर बाय करना है तो इट विल टेक सम स्टॉप लॉस, एंड मैं नहीं चाहता दैट आई विल बी द वन जहाँ पर जिसका स्टॉप लॉस आए, नीदर यू गाइस, ठीक है। जो लोग वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 मिनट्स में हमें मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रेड मिल जाएगा, दैट माइट गो क्रेजी, ठीक है। देखो इट्स अ वेरी गुड लेवल, मैं मानता हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट, दिस एंड दैट, बट मार्केट डज नॉट रिट्रेस ऑल द टाइम, सो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ अ वेरी गुड फकिंग विक दैट एंटर इनटू द एफईजी, ओके,
Just a second, guys. My bad, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad. Sorry, sorry. ओके, यहाँ से ऊपर जाएगा अभी, ठीक है. डोंट थिंक दैट थोड़ा. ओके ओके ओके, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक. गुड. यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है. यहाँ से ऊपर जाएगा. Or is it just like trying to manipulate? It did tapped into that FEG. That's very good sign. ठीक है. I just want कि और थोड़ा manipulate करे, and then we can go for it. ठीक है. थोड़ा और manipulation चाहिए. This candle will reject most probably. Let's see. Let's see. You saw that it came down. ठीक है. Tapped into that 5-minute fair value gap. That is very important level because that shows that it will go up. At least 3 कैंडल ऊपर बनेंगे. 3 कैंडल जो कि आई थिंक अच्छा खासा प्रॉफिट तुमको दे सकते हैं. ठीक है. सो yeah, wait for that. ओके, इट्स रिजेक्टिंग. ठीक है. 2.5 मिनट वेट करो. I'm saying, I was your first subscriber and damn. Okay. Okay, thank you so much, buddy. Thank you so much. Sing, let's go. All right. I need some rejection so we can buy off of the low area so we can have some more profit. So, yeah, it's gonna go up. Yep. Oh, fuck. I should have. But fine. No stress. ठीक है. I am in FOMO thoda, but like I know this is like one emotion that I really had to like work on, and it just like एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता. That's it. ठीक है. But I'm still not missing out on anything.
The only thing is that okay, I'm gonna be very honest. ठीक है, a good breakout went up, created a 5-minute FUG, right? Market came, tapped into that 5-minute FUG, and it is going up from that area. ठीक है, so now I know for the fact that it will go up, but just by 1-2 confirmation that I'm not gonna enter. तुम समझ रहे हो? I need some sort of more confirmation ताकि मैं बोल सकूँ कि okay guys you can fucking buy. तुम समझ रहे हो? तो वो चाहिए मुझे अभी. And I'm definitely sure there are so many people that are in like this right now. Okay, this position. समझ रहे हो? But yeah, dude, like it has to take out this stop loss, dude, and then we can see something like this. It has to take something like that. तुम समझ रहे हो? Okay, we're not buying. हम नहीं कर रहे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. It's okay. FOMO is fine. We're not buying. Simple as that. Okay, we're not buying. कैसे लग रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे? हेलो सर, मैं अभी आया हूँ. ऑनलाइन हब, लेट्स गो. वेलकम टू द स्ट्रीम और वेलकम बैक टू द स्ट्रीम. ओके, एवरीबडी हु वाचिंग, गाइस सब्सक्राइब करो गाइस. एवरीबडी फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक द स्ट्रीम एंड ऑल्सो turn on the notification, so whenever I'll be live you guys will be able to see me, and I'll be coming live आज 5 बजे, 5:30 बजे, and then you might able to see me live tomorrow. नहीं, tomorrow afternoon, yes 101%, ठीक है. tomorrow afternoon 12 और 11 PM मॉर्निंग में, एंड अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का हम एक बार टोक्यो सेशन कवर कर देंगे. दैट्स गोना बी लाइक 45 मिनट स्ट्रीम, ठीक है. क्विकली लेट्स सी, अगर उसे हम 2-3 ट्रेड हम कैप्चर कर पाते दैट्स गुड, बिकॉज मॉर्निंग में इट मूव्स लाइक क्रेजी always, ठीक है. that's the reason I did not want to buy. You saw that. ठीक है, let's not hype the shit up. नहीं यार, नहीं करूँगा मैं यहाँ से बाय, समझ रहे हो? नहीं, that's not dude, you saw that candle, it's great. आपने कैसे करे? ऑलरेडी कर दिए हैं, बुलाना मत भाई, हम लोगों का थोड़ा फोर्थ भाई. ओके, या नॉट फॉर यू गाइस. जिन लोगों ने किया है थैंक यू सो मच. जिन लोगों ने नहीं किया है, द पीपल आर कमिंग लाइव फर्स्ट टाइम, डू इट. ओके, डू इट फॉर द कल्चर, डू इट फॉर योर फैम. आई एम जस्ट किडिंग. ओके, दिस इज़ अ रीज़न दैट मैंने बोला था आई डू नॉट वांट to buy. It looks so good. This is too good to be true. You're getting my point? This is too good to be true. And if it's too good to be true, then bro, it's not true. It's not true. समझ रहे हो? I would say इसीलिए the reason is like, कहाँ है भाई आप? If you do not mind, कहाँ हो भाई? I'm here dude. घर पे हो अभी फ़िलहाल तो. I'm in Maharashtra. So yeah. ओके, दिस इज रीज़न दैट आई वॉज अवॉइडिंग, ठीक है, कि हम यहाँ से बाई नहीं कर सकते. देखो, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. मार्केट वेंट अप, it was accumulating at this area, right? I told you like how market moves, right? It accumulates, okay, then you might see some sort of manipulation, could be like this area, right? And then it distributes, right? And there is a lot of there are a lot of technical analysis to this, that how you can recognize that, because sometimes the manipulation is so big that you think that it's a trade, ठीक है. और वहीं पर बहुत सारे लोगों की गलती हो जाती है. जैसे अगर देखा जाएगा, लाइक डेफिनेटली, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 101% यहाँ से नीचे आएगा, बट इट हैज़ टू कम डाउन टू दिस एरिया फर्स्ट इन ऑर्डर फॉर इट टू गो अप. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दैट वाज द रीज़न दैट बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली लगा होगा कि यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, बट इन रियलिटी आई डोंट थिंक सो यहाँ से वो बाय कर सकते हैं. तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सो द अक्यूमुलेशन कैन बी, द मैनिपुलेशन कैन बी सो बिग दैट इट कैन ट्रिक पीपल इन अ वे दैट कि नहीं, यहाँ से ट्रेड हम ले ही सकते हैं.
तुम समझ रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ से एक ब्लैक कैंडल क्रिएट होती है राइट, जो कि पूरा अच्छे से सस्टेन कर रही है, देन डेफिनेटली आई एम नॉट गना सेल और बाय फ्रॉम हियर, that is very prominent. Even the market is bullish, that I know for the fact that it has to go up, right? अब ऊपर जाने वाला है ये पता होना, बट किस तरीके से जाने वाला है ये पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई फील लाइक। ठीक है, देन एवरीबडी नोज़ कि ऊपर जाने वाला है, देन हम यहाँ से बाय कर दे क्या? नहीं, देन सबके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है, लोगों के पास बहुत लोग 0.01 के साथ कभी कभी लॉट लॉट के साथ ट्रेड करते हैं राइट। नॉट एवरीबडी हैज़ दैट कैपेसिटी टू होल्ड द लॉसेस। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कट द लॉसेस एंड वेट फॉर अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड देन गो फॉर इट, देन तुम्हारे लॉसेस बिल्कुल भी जीरो हो जाएंगे। समझ रहे हो? दैट इज़ नॉट द केस ऑल द टाइम, बट आई थिंक अगर तुम अच्छे खासे सेटअप ढूंढते हो मार्केट में, देन डेफिनेटली इट कैन हैपन। Okay, enough of talking. Let's focus on this now. Okay, great, great candle. I would say, but a rejection. You see that this area is very prominent. Okay, अगर हम इसे एक बार हटा दें, this level, and I think this level also not very much important for me at this point. एक बार इसको हटा देते हैं. How it's looking? Okay, good. ग्रेट। ओके, इसीलिए हम बाय नहीं कर रहे थे, इट लुक्ड टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, दिस इज वाई हम लोग, दिस इज वाई वी वर अवॉइडिंग। अगर वहाँ से बाय भी कर लेते, देन तुमको समझना होगा ये अच्छे खासे पिप्स है। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा लॉस हो सकता था अगर तुम यहाँ से भी बाय कर सकते हो तो। इट केम टू दिस लेवल डूड, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने बाय नहीं किया। डेफिनेटली फोमो क्रिएट किया था मार्केट ने उस कैंडल के बाद। दिस आई थिंक दिस वाज द कैंडल जिसने हमको सबसे ज़्यादा फोमो क्रिएट किया था लोगों के दिल में, एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ से एंट्री लिया है, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, बट that is not important. What the level is there and it is gonna be there, simple as that. All right, what did I miss? I'm just kidding. क्या बोला था? We're not gonna buy. Okay, we're not gonna buy. ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, simple as that. Again it came down, two possibilities again. Okay, most probably if it's gonna go up and then again gonna come to this level, it has to invalidate this FEG. The 5-minute FEG is gonna get invalidated very soon. ठीक है, hold your thoughts, hold your horses and wait for this. 9 10 17 पौने 11 तक आई थिंक we might see something. Let's see. एंड अनदर थिंग, ठीक है, अगर मैं ट्रेड यानी अगर मैं लाइव आता हूँ, द पर्पज़ इज़ नॉट टू लाइक टेक अ ट्रेड एंड तुम लोग कॉपी करो। इट इज़ लाइक मोस्टली कि तुम लोगों के सामने मैं चार्ट को देखूँ, तुम लोग चार्ट को देखो, सी एवरी मिस्टेक दैट व्हाट मिस्टेक्स दैट वी कैन अवॉइड एंड नोट इट डाउन। आई होप कि तुम लोग जब बैठते हो तो एक सीखने के पर्पज़ से बैठते हो, नॉट जस्ट कि हाँ हमको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ नॉट द गोल। ओके, दैट विल नेवर बी द गोल। Okay, what is this? Crazy. Cool. डेफिनेटली अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो एक सेटअप के साथ ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा पेशेंटली। सबके पास उतने पेशेंस नहीं होते हैं, लोगों को चाहिए कि क्विकली कोई आके हमको बस ट्रेड दे दे, बट दिस इज़ नॉट हाउ यू विन और दिस इज़ नॉट हाउ यू विल बी अ ट्रेडर इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तुमको डेफिनेटली एक अच्छे खासे तुम कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स भी ज्वाइन करोगे, तुमको पता चल जाएगा, बट वही है, तुम लोगों पे डिपेंड रहना चाहते हो और एक्चुअली में खुद से सीखना चाहते हो, बिकॉज दिस इज़ अ स्किल दैट आई फील लाइक नॉट एवरीबडी कैन हैव, बट जिनके पास ये स्किल है, ब्रो दिस स्किल इज़ सो गुड, इट कैन चेंज योर लाइफ fully. Okay, it can change your life completely. Okay, yep, it can change your family trajectory to the like from the scratch. Okay, so yeah. Okay,
More rejection. Yep, more rejection. Need more rejection. Simple as that. See, the thing is that this candle came down, went up, and I think now this wick or something that is creating a FOMO. Okay. Okay. 8 seconds. Where it's gonna stop? ठीक है, और नीचे आएगा, थोड़े ऑर्डर्स फिल करने. देखो, बाइंग अगर होगा तो करंट हाई अगर ब्रेक होगा तभी होगा, उससे पहले तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. बिकॉज राइट नाउ दिस इज द लेवल दैट it wants to come to. This is the level that it wants to come to. Okay, this is the level that it wants to come to, and it will come to that level for sure. Okay, so in this level you will be able to see a inverse. ठीक है, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट शॉर्ट इज गोना बी वेरी शॉर्ट, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट शॉर्टिंग फ्रॉम हियर. दैट्स द ओनली रीजन. ओके, this candle is gonna be huge. This candle is gonna be huge. All right, it is huge. Sorry. निकल गए सारे स्टॉप लॉस. सिंपल, जो लोग बुलिश थे यहाँ पर, जो लोग यहाँ से लॉन्ग थे, एवरी स्टॉप लॉस इज गॉन. सिंपल, ठीक है. एंड इस लेवल से अगर रिजेक्ट करता है, डज नॉट मेक सेंस. इस लेवल तक आना ही होगा. इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये वाले लेवल को. ठीक है, इट केम इनटू दैट एफयूजी अगेन, समझ रहे हो. एंड यहाँ से इनवैलिडेट हमें एक इन्वर्जन देखना चाहिए, देखने मिल सकता है अभी. ठीक है, ओके, कूल. ठीक है, अभी ये वाला लेवल होगा नेक्स्ट, एंड फिर अभी तक आई थिंक एक रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे आ सकता है. इंस्टेड ऑफ बाइंग, वाई कांट वी जस्ट टेक अ सेल ट्रेड? इट्स अ डाउट, प्लीज एक्सप्लेन. ओके, वी कैन नॉट टेक अ सेल ट्रेड बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन अ गुड बेरिश पोजिशन राइट नाउ, तुम अगर देखोगे, बट उसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा नहीं है. तुम समझ रहे हो, अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं, हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, बिकॉज द ओवरऑल टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम या तुम 4 आवर टाइम फ्रेम देख लो, इट इज़ बुलिश. सो आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूँ. अगर वो शॉर्ट होगा, डेफिनेटली ये वाला मूव भी हम कैप्चर कर सकते थे, बट वो बहुत ज़्यादा टारगेट उसका छोटा होगा. सो वी आर नॉट एमिंग फॉर द स्मॉल टारगेट राइट नाउ, वी आर एमिंग फॉर द बिग टारगेट. इसीलिए मैं चाहता हूँ दैट गोल्ड शुड कम टू अ पोजिशन जहाँ से हम बाय कर सकते हैं. राइट, हमें पता है उस लेवल पे आएगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा. वहाँ से अगर हमें कुछ सेटअप मिलता है, देन वी कैन गो फॉर अ बाय. आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ सेल राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग राइट नाउ. ओके, देर आर सर्टन पॉइंट्स इफ इट्स गोना कम टू दैट लेवल, एंड अगर ये वाले लेवल्स अगर ब्रेक करता है ये वाले, राइट, देन आई कैन बी लाइक हाँ चलो ठीक है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं. देखो, देर इज 80% चांसेस कि इस लेवल से रिजेक्ट करेगा. वाई? बिकॉज there was a good resistance off of this area, right? So how market moves, when market moves like this, right, it goes up, it does this, right, and this is the level, right, this is level, it comes to this level and it goes up from there, right? So what is this area? So this is your buying area. So this is what market does most of the time.
Okay, this like a 80 plus probability of happening this. बट हमेशा इस लेवल से ही डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, राइट? इट कम्स टू दिस लेवल, इट देन इस लेवल पे आएगा, थोड़ा मैनिपुलेट करेगा, इस लेवल पे आएगा, सारे स्टॉप लॉस खाएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ चलो ठीक है यहाँ से हम सेल में कर सकते हैं, बट देन इट गोज़ अप। समझ रहे हो? सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल बाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर ओवरऑल बाइस देखोगे, दिस इज़ माई ओवरऑल बाइस राइट नाउ, and definitely there is a gap up here, right? Market will come to this level, but from which area, that is also very important. Okay, अगर तुम देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, you will be able to see some sort of rejection, but definitely अगर इतना बड़ा रिजेक्शन अगर तुमको देखने को मिल रहा है, राइट? लास्ट 5 मिनट बचे, अगर 5 मिनट में अगर ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तुमको ये भी पता चलेगा ये वाला लेवल भी फिल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देर आर सम ऑर्डर्स दैट आर पेंडिंग एट दिस एरिया, राइट? अगर ये विक इतना बड़ा क्रिएट होता है, देन हमें 2-3 कैंडल ऐसी चाहिए जो उसको फिल करे। तुम समझ रहे हो? इस टाइप की। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट शॉर्टिंग राइट नाउ, बिकॉज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव, द ओवरऑल जो भी बोल सकते हो तुम टाइम फ्रेम, इट इज़ बुलिश। देख रहे हो how smartly it went up, came down to same area, creating that much big wick, and you saw that, right? अभी इस लेवल पे आया, I'm pretty sure 70% of the people, 70% of the people are gonna buy from this area. Why? Simple setup जो तुम्हें बेसिक एस प्राइस एक्शन में सिखाते हैं। यहाँ से एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ओ इट केम डाउन, समझ रहे हो? इट केम डाउन, एंड उस लेवल पे अभी इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्या किया, करेक्ट किया यहाँ पर फिर से आके, राइट? यहाँ से फिर हम यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। बट डू वी हैव एनी अदर कन्फर्मेशन जस्ट बिकॉज कि ऐसा मार्केट में होता है? उसके अलावा कुछ है? नहीं है। तुम समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं यहाँ से भी बाय नहीं करूँगा अभी, बिकॉज इतना इजीली ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से भी। तुम समझ रहे हो? अगर तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली देर आर प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज ऐसा होता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, वी नीड सेटअप उसके साथ भी। तो इसलिए हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। नहीं तो ये हमेशा होता है। तुमको एक बार फिर से समझाता हूँ अभी क्या हो रहा है। तुमको आई थिंक पता चल गया होगा तुम लोगों को, ठीक है? ये हो रहा है अभी फ़िलहाल, ये हो रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है? ये हो रहा है अभी। और ये हमेशा होता है मार्केट में कि यहाँ से हमेशा ऊपर जाता है, बट कभी कभी इट जस्ट फक्स विथ योर अकाउंट, सो इसलिए हम उसमें अभी एंटर नहीं कर रहे हैं। और जो ग्रीन कैंडल क्रिएट करने का होल रीज़न वही है, टू जस्ट टू इनवाइट बायर्स, सिंपल एज दैट। ये जो ग्रीन कैंडल अभी क्रिएट हो रही है, इट इज़ जस्ट अ इन्विटेशन टू द बायर्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ठीक है? प्योर इन्विटेशन टू द बायर्स। या अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, डेफिनेटली ये अच्छा लेवल है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट अगर यहाँ से अगर हम बाय करते हैं, चलो टारगेट ये वाला रख लेते हैं, सिंपल एज दैट, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, ठीक है? डू यू रियली थिंक कि गोल्ड इसको बिना खाए या बिना लिए ऊपर जाएगा? डू यू रियली थिंक? आई डोंट थिंक सो। सो इट कम्स टू द साइकोलॉजी देन, ठीक है? रिजेक्ट हुआ, डू यू रियली थिंक ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, oh as a boo is gonna go up from here, like you know, so do you really think without taking this stop loss gold will go up? I don't think so. So yeah, okay, rejection, ठीक है?
1 मिनट पे क्या हुआ, रिजेक्शन. यू गेटिंग माई पॉइंट. आई नो कोई ट्रेड नहीं लिया, बट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड हाउ टू नॉट गेट इन टू एनी टाइप ऑफ लाइक फोमो, ये हो रहा है वो हो रहा है, लाइक टेक दैट इमोशंस अवे फ्रॉम यू लाइक राइट नाउ. ओके, वो इमोशंस होने ही नहीं चाहिए. इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट गोना टेक एनी ट्रेड. आज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट. मॉर्निंग सेशन है भाई, मॉर्निंग में कर लेंगे, कोई सीन नहीं है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बट फॉलोइंग अ सिस्टम, बिकॉज सिस्टम बिल्ड होने में टाइम लगता है. एनी टाइप ऑफ सिस्टम, इफ यू वांट टू like build a company or this or that, whatever it takes time. It does take time, right? Trading is just like that. So yeah, good rejection. So अब इस rejection के बाद तो मैं buy नहीं करूँगा ना. You're getting my point, because then there is a possibility that it has to go down, right? So what is the next level? यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से रिजेक्ट करना चाहिए या इस लेवल से रिजेक्ट करना चाहिए, बट अभी मैं बस बाई नहीं कर सकता, बिकॉज नो डूड, अभी वो कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, राइट. अगर तुम ध्यान से भी देखोगे, जब मार्केट नीचे आया, दिस इज़ द फेयर वैल्यू गैप दैट इट क्रिएटेड. ओके, व्हाट इज़ द वन पॉसिबिलिटी दैट वी कैन बाय. अगर इसको इन्वर्स करता है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को अगर इसको इन्वर्स करता है, तब जाके हम सोच सकते हैं ओके, ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, मार्केट ने उसको इन्वर्स किया, चलो ठीक है, यहाँ से देर आर पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो अप, बट राइट नाउ इट इज़ गोइंग डाउन ओनली. तो इसको मैं भी फिलहाल हटा देता हूँ, एंड इस वाले को भी मैं हटा देता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और ये वाला लेवल भी मैं हटा देता हूँ. ठीक है, गुड. अभी देखो कितना नेक टू नेक यहाँ पर हुआ है. ये वाला जो बॉडी है, राइट, द प्रीवियस बॉडी, मार्केट डिड कम. समझ रहे हो, जो लोगों ने यहाँ से बाय किया था, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बना था, ये वाला मैंने क्या बोला था, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इस लेवल पे, राइट. तो ऑलरेडी उनका आधा स्टॉप लॉस तो चला गया. जिन जिन लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो तो मार्केट से बाहर हो चुके हैं अभी. समझ रहे हो, तो वेट करेंगे बट फंसेंगे नहीं. दैट्स द मंत्रा. एंड डोंट थिंक कि अगर तुरंत ऊपर जा रहा है तो हम कुछ मिस कर देंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है. वो रिट्रेस करता है, हमेशा मौके मिलेंगे, राइट. इट विल गो अप एंड देन क्रिएट सम फेयर वैल्यू गैप एंड देन मार्केट विल कम डाउन टू दैट लेवल एंड वी विल गेट अ चांसेस. ठीक है, मार्केट हमेशा तुमको चांस देता है मल्टीपल लेवल्स पे टू बाय और टू सेल, राइट. टू डोंट इवन थिंक कि हाँ बहुत ज़्यादा एक स्पीड से जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रहा है, सो हमें टाइम नहीं मिलेगा. वी विल गेट द टाइम एवरी टाइम. Okay, okay, everybody watching, again attention, subscribe to the channel, turn on the notification ताकि जब भी मैं live हो, you'll be able to see me. And yeah, why there are only like few likes. Okay, subscribe to the channel, also like करो, so more people can come and they'll be able to understand that what is going on here. ठीक है, okay. जिन लोगों के पास बड़ा कैपिटल है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं. जिनका स्टॉप लॉस टाइट नहीं होता है वो लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एरिया जहाँ से हमेशा मार्केट फ्लिप करता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, देखो, नाइस नाइस मूव. इट माइट एंटर इनटू दिस जोन, लेट मी सी. देखो अभी ये जो एफईजी है 5 मिनट वाला, इसको हम इनवैलिडेट कर देंगे, इसको हम कम्प्लीटली हटा देंगे यहाँ से. द रीज़न इज़ कि अभी हमारे काम का नहीं है, बिकॉज उसको ऑलरेडी मार्केट इन्वर्स कर चुका है. तो अगर उसको इन्वर्स किया है तो देर आर हाई चांसेस दैट मार्केट विल गो डाउन, बट एट द सेम टाइम मार्केट इज़ इन बुलिश जोन, इट्स इन द सेटअप वेर इट हैज़ टू गो अप. तो इसीलिए मैं कुछ भी अभी डिसीजन तुमको नहीं बताना चाहता, या मैं डिसीजन खुद नहीं लेना चाहता. ठीक है, बिकॉज इट कैन मैनिपुलेट मोर, बिकॉज दिस एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव. यहाँ पर थोड़ा अक्यूमुलेशन तुमको और देखने को मिल सकता है. सिंपल एज दैट. कूल, ऑलराइट. नाइस, ओके, ग्रेट. 1 आवर स्ट्रीम, मतलब बंद नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू रहेगी स्ट्रीम, मैं बता रहा हूँ बस तुम लोगों को.
ओके ओके ओके, एवरीबडी लाइक द स्ट्रीम, लाइक द स्ट्रीम, लाइक द स्ट्रीम, फटाफट लाइक कर दो. $44. यहाँ पर एक अगर दोजी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, बढ़िया मज़ा आ जाएगा अगर दोजी मिलती है तो. बट उसके बाद भी हम बाय नहीं करेंगे, वी नीड एटलीस्ट दिस इन्वर्जन. ठीक है. ऑल्सो लाइक जॉश, डू यू हैव यू लाइक यू गॉट द आंसर जो तुमने पूछा था. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर. ओके ओके. ऑल्सो अगर तुम लोग को चाहिए डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस ट्रेड जो हमने यहाँ पर लिया था, ये वाला, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए डिटेल में इसके बारे में, तो लेट मी नो. आई कैन मेक अ फुल वीडियो ऑन इट कि व्हाट वाज द सेटअप, व्हाट वाज द माइंडसेट, व्हाट वाज द साइकोलॉजी, व्हाट वाज एवरीथिंग with this trade, like how this trade turned into this, and with a very not much lot by the way. ठीक है. अगर मैं 2 लॉट के साथ 3 लॉट के साथ अगर ट्रेड करता तो मैं इसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देता, बट ये ट्रेड 0.7 लॉट के साथ लिया था एंड तब जाके इतना प्रॉफिट हुआ है. तभी जाके मैं बोल रहा हूँ इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू टेक ट्रेड्स लाइक दिस और होल्ड ट्रेड लाइक दिस. समझ रहे हो. ये बहुत कम देखने को मिलेगा तुम्हें, इतने कम लॉट के साथ इतना बढ़िया प्रॉफिट. नाइस. दोजी बनी है, बट द ओनली थिंग इज दैट दोजी इज नॉट अ ग्रीन दोजी, इट्स अ ब्लैक दोजी. ठीक है. ग्रेट लेवल जहाँ से एक अच्छी खासी बाय लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट प्राइस एक्शन एंड ओके, कूल कूल कूल. ठीक है. बट देर आर चांसेस दैट इट विल मैनिपुलेट मोर. दैट्स इट. वी आर नॉट बाइंग, सिंपल एज दैट. एंड एक चीज़ और ध्यान में रखना नेक्स्ट टाइम. ठीक है. तुम गोल्ड में ट्रेड करते हो, एवरीबडी ट्रेड्स इन गोल्ड. दिस सेटअप अभी तुम्हें कुछ देखने को मिल रहा था जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है. ठीक है. इट हैपन्स एवरी अल्टरनेटिव डे इन द मार्केट, चाहे वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो चाहे वो बिगर टाइम फ्रेम पे हो. इट हैपन्स एवरी अल्टरनेटिव डे इन द मार्केट. What you need to do, you need to draw that whole structure on the pen, paper, notebooks, whatever it is, जो भी है. ठीक है. लैपटॉप में ड्रॉ करना है ड्रॉ करो. मेक श्योर दैट यू फाइंड आउट ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट करता है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके. देन यू विल हैव पॉइंटर्स कि इस स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कहाँ से एग्जैक्टली बाय नहीं करना है और कहाँ से एग्जैक्टली सेल नहीं करना है. ठीक है. बिकॉज इट हैपन्स ऑल द टाइम इन द मार्केट. 90% ऑफ द थिंग्स दैट यू सी ऑन द चार्ट, इट इज़ रिपीटेटिव, दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, एंड वही चीज़ मार्केट हमेशा रिपीट करता है. दैट इज़ वाई पीपल से दैट रीडिंग चार्ट इज़ लाइक अ स्किल, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ स्किल. अगर हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं होता तो वी रीड द प्रीवियस डेटा, we find out the setups, we see the market, the behavior and everything, and then we come to the conclusion, हाँ अभी इस सिचुएशन में इस तरीके से मूव कर सकता है. इट इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन, इट इज जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन, सिंपल एज दैट. ओके. वी आर नॉट बाबा, वी आर नो वन टू प्रेडिक्ट. ओके. we are humans, we can't do that. We can work on data, simple as that. We can work on action, reaction, simple. Okay, I hope that is clear for you. So that's why journaling is very important when you are trading. Okay. I hope you got the reason that हमने यहाँ से buy क्यों नहीं किया. I hope that was clear for you guys. And मैंने बोला था अगर हम यहाँ से buy करते तो हमारा stop loss कहाँ पर होता. अरे कहाँ पे गया वो. हमारा stop loss कहाँ पर होता अगर यहाँ से buy करते. हमारा stop loss होता इस लेवल पे, जो कि ऑलरेडी इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, जो कि ऑलरेडी मर चुका है. लोग मर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी. समझ रहे हो. एग्जैक्टली. Go back to the stream, go back and check what I said. Okay. That was that what happens when you analyze the market, when you backtest
8 hours, 4 hours, 6 hours, 7 hours. It's a game. You just know how to play it. Once you know how to play it, I mean, there is no one can fuck with you then. You're getting my point? Build your own system. Chalo. Enough of motivation. I think at this point I sound like a baba. But nahi. I really want to play some songs on the stream जब हम ट्रेड लेते हैं. I really want to do that कि हम जब एक बार ट्रेड लेते हैं उसके बाद ज़्यादा बकचोदी नहीं चाहिए. I just want to like sit back, relax. Everybody who's taking the trade just watch and stop loss लगाओ, अपना TP लगाओ and enjoy करो. But this fucking YouTube dude, it doesn't like let you play anything. समझ रहे हो? देखो अभी बाइंग कहाँ से हो सकती है? बोल दूँ? बाइंग होगी जब इस लेवल को क्रॉस करेगा. तुम समझ रहे हो? वही मैं बोल. रिवाइंड द टेप व्हाट आई सेड अबाउट दिस. ठीक है, किधर गया वो ड्राइंग? है क्या अभी वो? वेयर इज दैट ड्राइंग जो मैंने किया था ड्रूड? गो बैक एंड देख लो एक बार व्हाट आई सेड. यप, इट हैपेंस ऑल द टाइम. अभी नाउ ठीक है. देर इज, व्हेन आई से देर इज 87% of the chances that it will, if it's gonna reject off of this area, it's gonna go up. Okay, but the setup is still missing. So what I'm focusing on right now, we're focusing on the setup, and it is bearish. So we're respecting that. We're not going against the trade. Once it will reverse, okay, once it will change its direction, then we can go for something. तुम समझ रहे हो? मैंने ये कैंडल जब क्रिएट होती तभी मुझे पता था कि इस लेवल पे आना था. द ओनली थिंग इज दैट ये वाला हमें कैप्चर नहीं करना था. दैट इज़ वाई वी डिड नॉट एंटर इनटू दिस. ठीक है, चले गए सारे. ओके, निकल गए सबके स्टॉप लॉस. ओके, दैट इज़ व्हाट मार्केट वांटेड. सिंपल एज दैट. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. आई थिंक जब ये कैंडल क्रिएट हुआ था, आई सेड दिस इज कम्प्लीटली इन्विटेशन for the buyers. Was it? Yes, it was. You're getting my point? It was an invitation for the buyers, and that's what happened. So now this whole thing, the breakout, was what? Manipulation, right? The whole thing was what? Manipulation. जो भी अभी हो रहा है सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग स्ट्रीम में बोल दिया दैट दीज आर द पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन मूव इनटू दिस. ये भी मैंने बोल के रखा था. लीस्ट इफ इट्स गोना कम डाउन, इट्स गोना कम डाउन टू दिस लेवल. एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो भी राइट, बिकॉज इस अगर लेवल इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है देन दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल, राइट. बट डायरेक्टली इस लेवल पे नहीं आएगा, वो भी मैंने बोला था. अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो यहाँ से पूरा ही रिजेक्शन तुमको देखने को मिल सकता है एट दिस पॉइंट. सिंपल एज दैट. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर तुम्हें बड़ा भी देखने को मिल रहा है देन गो फॉर इट. ठीक है. There are two breakouts. This breakout happened, came, then it, don't be too जल्दी. ठीक है, यहाँ से जल्दबाजी मत करो. जल्दबाजी मत करो.
नो जल्दबाजी प्लीज. It's a story, dude. Full on story. Follow the story. Look at it as a story, and you're good to go. क्या रिट्रेसमेंट होगा यहाँ से? What do you think? 43 seconds. Do you think market will retrace or it will directly go up? Oh, it is retracing. Crazy. Let's see. Is it gonna retrace or directly go up? Okay. चलो 1 2 3 4 नो वेट करो. एटलीस्ट इस लेवल का वेट करो ब्रेक होने का. सबको, सारी दुनिया को पता है ऊपर जाने वाला है, बट नहीं इतने जल्दी नहीं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ये इतना बड़ा अगर नीचे विक क्रिएट किया, ग्रेट लिक्विडिटी स्वीप एट दिस एरिया. ओके, केम डाउन, टुक ऑल द स्टॉप लॉसेस एंड द नेक्स्ट टारगेट इज डेफिनेटली दिस. बट उससे पहले we need this level to cross. Can we buy from 4925? 4925. Yeah, we can, but early entry होगा. It might manipulate थोड़ा, तो इसलिए हम एक अच्छे लेवल का वेट कर रहे. That's it, nothing else. Okay, great. फट गया, चलो बाय कर लो अगर कर रहे हो तो. स्मॉल क्वांटिटी के साथ करना एंड स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना बस. अगर यहाँ से नीचे गया देन दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन. समझ रहे हो? जो कि उसकी चांसेस बहुत कम है. बा बा डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? कम ऑन डूड. ऑलरेडी 300. डायरेक्टली नहीं जाएगा. ठीक है, अभी इस कैंडल के बाद थोड़ा हो सकता है थोड़ा करे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द स्टॉप लॉस इज दैट बिग. तुम लोग थोड़ा टाइट रख सकते हो एंड यप. Oof, 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 oof. What did I miss? Let's fucking go. You saw that? कट कर दूँ, कट कर दूँ, कट कर दूँ? ना ना ना, होल्ड करते, होल्ड करते, होल्ड करते. यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा. TP1 बुक कर दो. TP1 बुक कर दो. ठीक है, TP1 बुक 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 कर दो. अगर TP1 के लिए हो तो बुक कर दो. ठीक है, TP2, लेट्स गो फॉर दिस.
Welcome, buddy. Subscribe to the channel. Make sure you come daily. Okay. All right. Let me remove this bullshit. Let me remove every other line that we have. Fuck this shit. Let's fucking go. Joshi. What is this? D Maya. Oh, I don't know what the fuck is that, dude. Whatever. But like, yeah, thank you so much. Really appreciate that. Can you see that? Can you see that? Can you see that? Okay. 1100 fucking come on, dog. You don't fuck with me with this. Let's go. TP1 is booked, by the way. We can book the quantity. You guys can book the quantity right now. You guys can book the quantity, but we're waiting for the TP2. But yeah, that is like 1200. And okay, this is the target. Let's go for it. No stress. Okay, it's all right. It is gonna retrace. It is gonna do all that bullshit. We are okay with that. Okay, we are okay with that. Okay. But yeah, crazy. TP1 is book. Hope you have your stop loss and everything ready, and make sure that टाइम लगेगा. अगर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है देन यू कैन गो फॉर TP1 निकाल दो बिकॉज आई कैन टेक द लॉसेज. आई डोंट वांट यू गाइज टू फेस एनी लॉसेज. ओके, बिकॉज बहुत मेहनत का पैसा होता है सबका. आई मीन मेरा भी मेहनत का है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. बट या यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा बिकॉज दिस लेवल इज दिस. समझ रहे हो? प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सो इस लेवल पे आके लाइक दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑल्सो. ठीक है, समझ रहे हो? तो इस पर थोड़ा फोकस तुम्हें करना होगा. बट डोंट वरी, TP1 में तुम निकाल सकते हो, बट मैं तो इसको होल्ड करूँगा एंड आई विल होल्ड फॉर और थोड़ा टाइम. ठीक है. TP1 वॉज टू ईजी. ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा TP2 के लिए, बट वी आर स्टिल इन द गेम. Oh, what happened? BTC, I will see you later. $500 still in, no stress, no issues. Still holding, still strong. Okay. It is gonna happen. No issues. ठीक है. 2 minutes. There is 2 minutes for this candle. 5 मिनट का कैंडल अगर पूरा ही नीचे आ रहा है with the body, there is a high chances that it will create a good wick downside, rejecting off of this area. ठीक है. So how many minutes for that? Let me check. 2 minutes. Last के 2 minutes. That will be a decision making. But TP1 is already done. You guys can book your profits. We are holding for TP2 right now. ठीक है. Can we move the SL2? Yes. break even कर दो. अगर करना है तो break even कर दो. ठीक है. अगर तुमने बुक नहीं किया है TP1 पे, you can go for break even. Completely fine. No stress. Zero loss then. ठीक है. अगर worst case scenario with all the learning and all the time this and that, are we in trade? Yes, Pranjal, I guess you are थोड़ा late. Not ज़्यादा late, थोड़ा late. But yeah, we're still holding. I'm interested in this candle. I need the rejection. 5 minute पे I need the rejection. Already booked 20 USD. Great. TP1 book कर दो सारे. ठीक है. TP2 में थोड़ा टाइम है. TP1 book कर दो. Okay, we saw the rejection. I see that. How much? $600. All right. No stress.
If it goes against me, I have no regrets, dude. I have no regrets. This is a extraordinary analysis in front of everybody's eyes. We're recording. I can watch this trade anytime, whenever I want. It's just a win-win situation. Okay, no stress, no stress. The only goal is the goal is for you to understand how it works and for you to take trades and make profit. Simple as that. Okay. Okay, no rejection. That is not a good news, but we're holding. We're still holding. Let's go. Damn, it looks bad on this dude. The whole structure is bearish. We're still bullish. We'll get to know the answer. Or you will get to know the answer. Let's find out. W is in the chat for TP1, by the way. Okay. And everyone who is here, I want. Why the fuck you guys are not liking the stream, dude? Like the stream right now. ठीक है, सारे लोग like करो फटाफट. I am available at 8:30, maximum 9 p.m. Okay. And afternoon में at 11 a.m. or 12 p.m. ठीक है. These are the two timings mostly. Sometimes I come live in the Tokyo session, यानी कि like जो भी Asian session होता है उसमें भी I come live. So you guys can come join that too. Okay. Everybody who's here want to join daily live streams, just subscribe and just turn on the notification, dude. It's not that easy. ठीक है. And let me show you something. We're still here, we're still holding strong, but let me just quickly show you the history. Okay, these are the histories of the trade that we took before, and I think ये account हमने grow किया था how much 2000 से अभी now it is standing on 20,000. Okay, so yeah. Thank you so much, brother. Josh is the boy, dude. I mean, not that much, right? 1:2. Fine. No regrets. If it goes down, also no regrets. But TP1 is done. As I told you, it might take for time for the TP2. It might just come back and retrace and recorrect and this and that. But yeah, we're good. We're good. We're good. But I might rage bait, dude. I might rage bait if it's gonna go down. Because I've been analyzing for like a long time now. It's been like 2 fucking hours. Okay, we're at break even, dude. I was quick for the TP1, no? Quick. TP1 was quick. Always the TP2 that makes you wait. I'm stressed now. No way.
The analysis is done. Now it's the result time, dude. It's the result time. Are we cooked, chat? Are we cooked? Fuck that shit. Are we cooked? Nah, man. It's a perfect trade, dude. Like, it cannot hit SL. It cannot hit SL, dude. It's a perfect setup. It's a perfect trade. It's a perfect opportunity. I mean, okay. Okay. Good reversal. 12 seconds. Need one more green. Go green. Let's go. Meanwhile, do you guys want to like listen to some non-copyrighted music, or you guys are good? Let's do some. Fuck that shit. No music. Focus on the trade. I hope we're in profit now. Oh, we're in profit. We're in 300, dude. 1000. It's a great journey from 1000 to 300. Damn. So bad. Okay, again. Close to TP1. Fair enough. It's gonna be celebration if it's gonna hit TP1. TP2, sorry. It's gonna be celebration on the stream. But gold really want me to celebrate today. Let's see. Let's find out. Let's find out. Chat. Are we cooking? What do you think? Are we cooking? Or are we just like doing nothing? I feel like we're cooking. The silence is crazy, dude. It's killing me. Okay. I think अब थोड़ा blast होना चाहिए. I mean, it's too silent. तो समझ रहे हो? थोड़ा blast चाहिए अभी. This candle want some type of blast, like zoop. समझ रहे हो? Okay, ठीक है. Yeah, this candle wants, or like after this one, it wants thoda blast. Ah, dude, again, no. Rejection from TP1 does not make sense right now. Okay, just go up. Just fucking go up. I don't think anything. Just fuck it. I don't think anything. I'll just right now.
Bro, is it gonna create this? Then I'm cooked. If it's gonna create this, then I'm cooked. Oh, goddamn. God damn it. Nah. No, 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 no. Fucking hell, dude. Diabolical. Okay. This is diabolical. Mm-hmm. ठीक है. Fucking hell, okay. Let me draw a jadui line. Okay, this is a jadui line. ठीक है. This is a jadui line. No candle should cross this. No candle should cross this. ठीक है. Damn it really entered this FEG, dude. It tapped into this FEG. That's diabolical, honestly. Oh fucking hell! It's not looking good. We're cooked. We're cooked. Fucking cooked. Oh shit. Boy, Jadoo line is not working, boys. 35 seconds for the Jadoo line. Jadoo. 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 Okay, Jadoo. Okay, Jadoo is going up. It's working, chat. It's working. Jadoo line is working. As of now, it's working. Green. No. No, 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 no. If we break that Jadoo line, we are cooked. Yes, exactly, Jadoo. Spam Jadoos in the chat. Ayo, no. 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 Okay. Should I be happy? WTB2 Jadoo Group. Jadoo Goop. Bro, like it's not looking good. It's not looking good. The Jadoo is not working. Oh shit. We're cooked. We're cooked. We're cooked. The Jadoo is not working, dude. It did not work. It is gonna create this. At this point, I'm just giving दिलासा. This. ये हमेशा होता है मार्केट में, ठीक है. अभी let's see if this is strong or my analysis is strong. Let's see what is strong. Okay.
Nah, we're cooked. Chat, we're cooked. I think the TP one, that was the journey for all of us. Okay. People who booked the profit, let me know. We're still in the game. Okay, we're not going back. We're holding strong. Okay. But this scandal is crazy. The scandal is crazy. Scandal is crazy. It's fucking with my head right now. Is it gonna do M? The M is strong or the analysis is strong? Let me just. Ah, dude, hell nah. Hell fucking nah. And for the fact that I know it's gonna come to this and it's gonna go up, for the fact that I know, it's just crazy. Uh, if it's gonna create a SMT, then I'm happy. Can we see a wick? Okay. Can we see a wick? लास्ट के 2 मिनट में. Okay. Yep. Yep. Can we see a wick? Chat. I sort of cooked. And you just saw the liquidity sweep of this area. A great liquidity sweep. I mean, the jadoo did not work. It's okay. Sometime what it's okay. DP1 तो ले लिया था ना. हाँ चल ठीक है. मैंने नहीं लिया था बस. But just waiting for this candle to close and then I'll close this trade. Okay. Diabolical. The amount of manipulation you see in the gold, it's just crazy. Oh shit. It's going, right? Don't worry. I mean, I hope you guys are out of this trade because it does not make sense. Only thing is that if it's gonna reject, then you can enter, but not right now because that's not what I suggest. Never enter back to back. Make sure that you always take time and then you do whatever you want. But yeah, great rejection, I would say. Okay. And 43 second is gonna be full of rejection. If it's not, then we're out. Okay, chat. This was an L, definitely.
we were aiming for the TP2, right? Definitely it will go to that level. The only thing is that I want to hold this trade. I see some potential. There is a potential that it wants to go up, definitely, right? I can take the losses, that's completely fine. I hope you guys are out of this trade. No issues, we still managed to take TP1, and it was supposed to go down and take this liquidity, right? This liquidity is very important if it's gonna go to this level eventually, right? Even though if it wants to go to this level, it has to take this liquidity and then come to this level. तुम समझ रहे हो? Just what is this, right? It has to come to this level. Okay, but for that it needs to take out this liquidity. Okay, and I know for the fact that it will come to this level, take out the liquidity, and then it's gonna come down, right? So this is gonna be my TP. It will be like that, but I can take some losses. Let me see how far it can go, right? And if you can see that there is a trend line here, okay, at this level, if it's gonna break, it's gonna come down, then I'm gonna close this trade, but I am still holding this. Okay, I'm still holding this. I would not suggest you to do that because I have that loss taking capacity. Not everybody can have it, simple as that. Mostly it's gonna reject off of this area, and that's completely fine. But yeah, for today's stream, the analysis was in front of your eyes, the trade was in front of your eyes, everything was in front of your eyes. Okay, agar if it's gonna cross this level, I'm not gonna hold after that, but I think it has to go up. A lot of liquidity at this area, has to take this liquidity, and we're gonna wait for that. Okay, I always think for a long term, and this is my long term perspective. Got it? Thank you so much for joining the live stream after so long. Okay, we're gonna come up with new trades and a new opportunity for you all, and let's see how it's gonna go in future. We're gonna capture some good trades. This is a loss that we took, I think, after a long time, but that's completely fine. Losses are part of the game. We do not fucking care. All right. The main thing is that are we still in the game? Yes, we're gonna continue trading, and this is gonna be the journey for us, and everybody can come learn and do what they can like possibly do for their family or for themselves. Okay, thank you so much for watching the stream. I hope you enjoyed the every analysis, this and that. Now it's gonna go up. Okay, don't worry, I'll show you the profit. Join the community, the link is in description. I will show you the profit on this trade only. Okay, cool. Thank you so much for watching the stream, and have a good night. See you tomorrow afternoon 11:30 on my channel, this channel. Bye.